हेलो फ्रेंड्स। तो दिस आवर सेकेंड यूनिट ऑफ कोर्स MCO 1। ठीक है, ये इग्नू MCOM MCO 1 का यूनिट 2 है। यूनिट 2 बोले तो ब्लॉक 1 का यूनिट 2। ओके, इसका हेडिंग है आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। एंड हम पूरा यूनिट कवर करने वाला है इस वीडियो में। तो पूरी तरह से तैयार होकर बैठ जाइए, पानी वानी ले लीजिए। ठीक है, वॉशरूम करना है तो कर लीजिए। ठीक है, एंड बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, बी फोकस्ड। जितना अच्छा से ध्यान देंगे आप, इतना अच्छा से समझ में आएगा आपको पूरा का पूरा यूनिट। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा इस पर। तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया होगा मान लीजिए, तो पता चल गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना, उसी तरह से इस यूनिट का भी स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस प्रोसेस है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लासिकल मतलब होता है बहुत पुराना थ्योरी। ओके, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है। ओके, then comes the neo classical theory, means ना क्लासिकल है ना मॉडर्न है, बीच बीच का। उसका मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में है थ्योरी। फिर मॉडर्न थ्योरी में आ गया सिस्टम थ्योरी एंड कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ओके, 2.7 में होगा कॉन्टेम्प्रेरी इशूज इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आज की डेट में कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कि अभी के मॉडर्न युग में बोल सकते हो आप, आज कल के दिनों में क्या क्या इश्यूज हैं इसमें। उसके बाद करेंगे हम लेटेस्ट सम अप। लेटेस्ट सम अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको जिस्ट मिल जाता है। इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। एंड एक चीज़ बता देता हूँ, मैं एग्ज़ाम के करीब में लेटेस्ट सम अप जो है पूरे कोर्स का, ठीक नहीं, इसका वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स में स्कोर तो आपको पूरा यूनिट पढ़ के ही होगा, बट लेटेस्ट सम अप अगर आप सिर्फ करेंगे तो भी आपको कुछ न कुछ लिखने को मिल जाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहा, पूरा ऊपर से जा रहा है। ओके, लेटेस्ट सम अप अगर कर लेंगे तो इतना तो आइडिया मिलेगा आपको। उसके बाद होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की मीन जो मेन वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक ना, उसको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाया जाएगा आपको। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, क्या क्या मतलब सुपर पावर्स आपको आ जाएंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद। सुपर पावर्स नहीं, मीन्स ऑब्वियसली कुछ नॉलेज मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे या ये सारी चीज़ें पे समझ पाएंगे। देखते हैं इसको। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को समझ मतलब डिस्कस कर पाएंगे। ठीक, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिस्क्राइब द क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पुराने थियोरीज हैं ओल्डन डेज के, उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। डिस्कस द न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मिडल एज थियोरीज हैं उसको भी आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक्सप्लेन द मॉडर्न थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल की जो थियोरीज हैं, ठीक है, मॉडर्न थियोरीज, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। एनालाइज द कंटेम्प्रेरी इशूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे एक पिक्चर मूवी जो आती है उससे पहले उसका एक वो आता है, ट्रेलर आता है। ओके, तो ट्रेलर इज़ ए इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें कि सारी चीज़ें होती है। अब फटाफट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं वी आर बोर्न इन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेटेड बाई ऑर्गेनाइजेशन एंड, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, वी आर बोर्न इन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेटेड बाई ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट ऑफ अस स्पेंड मच ऑफ आवर लाइफ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि या तो हम लाइवलीहुड भी कमा रहे हैं, ठीक ना, मोस्ट ऑफ अस, हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक ना, कोई इंटरप्रीनर भी बने, ठीक ना, स्टिल ही विल बी वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ही पैदा लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में पाते हैं, जिससे आपका स्कूल बोला जाता है, कॉलेज बोला जाता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हो सकता हो स्कूल कॉलेज हो या कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई फर्म हो, उसमें काम कर रहे होंगे आप फॉर लाइवलीहुड।
ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी, ऑब्वियसली ये तो आपको यूनिट 1 में ही क्लियर हो गया था कि एक सोशल एंटिटी है। ग्रुप टुगेदर एंड इंटरेक्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने के लिए, ठीक ना। उसके कारण से पर्पसलेसली कोई नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। एक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए कुछ कॉमन गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, ये मतलब संदर्भित है किसी से, एक प्रोसेस जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाता है एक्टिविटीज़ को और उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाला जाता है। डिफिनेशन एंड इंस्टॉलेशन, डिफाइनिंग एंड इंस्टॉलेसिंग द ऑथोरिटी, ठीक है। ये देखिए ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एंड ये जो है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफाइन और एस्टेब्लिश क्या किया जाता है? ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप, ओके। एंड डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। दस द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सीधा शब्दों में, आम भाषा में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं कुछ लोग, फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं कुछ लोग। इसमें दो से ज़्यादा होगा, एक आदमी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, पहली बात। उसके बाद वेरियस थ्योरीज हैज़ बीन प्रोपोंडेड विच एक्सप्लेन्स द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड, ओपन एंड डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। कई सारे थ्योरीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड, ओपन और डायनेमिक सिस्टम, ओके। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड, ओके, क्या होता है? एज ए क्लोज्ड सिस्टम, मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से इसको समझा जाता है कि एक क्लोज सिस्टम है विच डज नॉट गेट इफेक्टेड बाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि क्लोज्ड सिस्टम है जो कि बाहर की कोई इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं होता है। हेयर द फोकस फॉर डिजाइनिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विच फैसिलिटेट्स पीपल टू कंप्लीट इट्स ऑब्जेक्टिव स्मूथली, ठीक ना, ये समझ में आ गया। Contrarily, the modern view of organization accepts the environment as an integral part of the organization reality, ठीक है। आसपास के environment का बहुत फर्क पड़ता है, ये मॉडर्न थ्योरी कहता है। इससे उलट, contrary मतलब कि उससे उल्टा। Therefore, to accomplish predetermined goals, the organization must adapt to external environment, ठीक है। इसलिए प्रीडिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एडेप्ट करना चाहिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एडेप्ट करना चाहिए। द ओपन सिस्टम व्यू परसीव्स द ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या बोलता है? सोशल सिस्टम है। इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ सब सिस्टम, कई सारे सब सिस्टम्स होते हैं इसमें, कह रहा है। विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड, ठीक है, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। मैन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरवोवन, आदमी और उसका ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से, मतलब इंटरवोवन मतलब एक दूसरे से बुने हुए हैं। मैन वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सीक ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, आदमी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उससे चाहता है कि उससे काफ़ी बेनिफिट मिले। Successful organizations imply the well-coordinated efforts of two or more persons. These persons may enhance their ability to reap the benefit from the organizational entity. ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? अपनी एबिलिटी को बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाला जा सके उस ऑर्गेनाइजेशन से। इन दिस यूनिट यू विल लर्न द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। कंसेप्ट ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे आप यहाँ पे। यू विल फर्दर लर्न वेरियस थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे थ्योरीज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको भी पढ़ेंगे। ये भाग जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू विल वी ऑल्सो एक्वेंटेड विद द कॉन्टेम्प्रेरी इशूज इन ऑर्गेनाइजेशन,
मीन्स आजकल के दुनिया में जो इश्यूज फेस किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी समझेंगे। ओके, उससे भी हमें अवेयर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 2.2 कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organization refers to the process involving the identification and grouping of activities to be performed and the defining and establishing the authority responsibility relationship। अब ये चीज़ जो है काफ़ी रिपीटेडली आ गया, पहले भी पढ़ लिया आपने, ठीक ना। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। किनको? एक्टिविटीज़ को। कौन से एक्टिविटीज़ को? जिनको करना है, जो एक्टिविटीज़ को करना है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, एंड डिफाइनिंग एंड एस्टेब्लिशिंग, डिफाइन और एस्टेब्लिश किया जाता है क्या? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। अथॉरिटी पावर हो गया, ठीक है, किसी को क्या कर सकता है, क्या अथॉरिटी है उसकी, ठीक है। दूसरा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना अथॉरिटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा। उसके बाद रिलेशनशिप, क्या है? रिलेशनशिप्स एक दूसरे के बीच में मेंटेन होगा। ओके, दिस इनेबल्स पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अचीविंग द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ये करने के बाद क्या होता है, ये हेल्प करता है आपको, इनेबल करता है टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली, कि मोस्ट इफेक्टिवली काम करने में मदद करता है। ये किस लिए, ये सब किस लिए भाई साहब? ये इसलिए ताकि इंटरप्राइज का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव किया जा सके। इन अ जनरल सेंस, बोले कि एकदम आम भाषा में, ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग एंड अरेंजिंग फॉर मेन मटेरियल, मशीन, मनी रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द अटेनमेंट ऑफ इट्स गोल, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए किन सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है? मेन आदमी, मैन पावर, मटेरियल, जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिसको आप मैन्युफैक्चर और कुछ चेंज करने वाले हो उसमें, मशीन्स, जो मटेरियल्स को प्रोसेस करने वाला है, एंड पैसा, ठीक ना। बिना पैसा का तो कुछ नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो एसेट ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये हो गया। इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑपरेशनल सेंस, मतलब रिस्ट्रिक्टेड एक जनरल सेंस में तो हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑपरेशनल सेंस में होगा। द टर्म ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिफाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच दियर एक्टिविटीज आर टू बी इंटर रिलेटेड, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑपरेशनल सेंस में देखा जाए, ठीक है, तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी का सेट करना हो गया एक ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। एंड उसके बाद फिर डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच द एक्टिविटीज़ आर टू बी इंटर रिलेटेड, एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी कैसे रिलेटेड होगा, ठीक ना, इस चीज़ को भी डिटरमाइन करना है। द एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल इन डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही क्रिएट करना होता है, एंड रिजल्ट इसका ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड रिलेटेड नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक ना। एक ग्रुप में वैसे ही लोगों को या एक्टिविटीज़ को रखा जाता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन consist of a group of people working together for the achievement of one or more common objective, common goal, ये सारे जगह पे बताया जाएगा, क्योंकि ये कॉमन होना चाहिए तभी सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। इन यूनिसन ऐसे ही जाके टाइम पास करने को ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाएगा। ओके, Robbins has defined organization as a consciously coordinated social entity with a relatively identifiable boundary that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set up goal। रॉबिन्स क्या बोल दिए भाई? रॉबिन्स कहते हैं कि एक कॉन्शियसली में जानबूझ के होशो हवास में, मतलब होशो हवास में चलने वाला एक सोशल एंटिटी है, सोशल फर्म है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, विथ रिलेटिवली आइडेंटिफिएबल बाउंड्री, एक बाउंड्री, इसका दिखने वाला बाउंड्री जो है, ठीक ना, होना चाहिए, एक बाउंड्री के अंदर ही काम करेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे काम करेगा, एंड कुछ कॉमन गोल अचीव करने के या कई सारे कॉमन गोल अचीव करने के तरफ काम करेगा। 10
इसलिए it can be concluded that an organization is an economic and social entity in which a number of a person performs tasks to achieve a predetermined goal। पहले से फिक्स किया हुआ गोल को अचीव करने के लिए कई सारे लोग मिल के जब काम करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। This helps them to accomplish the personal goals like socio-economic satisfactions which they cannot achieve alone। ठीक है, ये हेल्प करता है उनको कि वो अपने पर्सनल गोल्स लाइक सोशियो इकोनॉमिक्स मतलब सोसाइटी में, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक मतलब पैसे, धन मिलेगा उनको ये काम करके। सेटिस्फेक्शन में जब मिलेगा उनको तो सेटिस्फाइड होंगे वो, ठीक है, जो कि अकेले नहीं कर सकते, इसलिए वो ग्रुप में करते हैं। सिमिलरली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ए क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि स्ट्रक्चर पहले से क्लियरली डिफाइंड है, ऑफ द एक्टिविटीज कॉन्शियसली डिजाइंड टू अलाउ ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। कॉमन गोल की तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं, वो भी इफेक्टिवली। The characteristics of an organization are as follows। ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये इस तरह से हैं, फटाफट करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, देखिए, an organization comes into existence when a group of people combine their efforts for some common purpose and willingly contribute towards their common endeavor। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब एक दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ एफर्ट लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन पर्पस एंड मतलब अपने मन से, ज़बरदस्ती नहीं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, किसी कॉमन एंडेवर की तरफ। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। Setting of an organization involves division of the total work into various activities and functions and assigning the task to different persons according to their skill, ability and experience। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एक ही काम करेगा तो फिर पूरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हर कोई वही काम करेगा जिसमें वो बेस्ट है। ठीक है, ये हो गया इसका जिस्ट। कॉमन पर्पस। Every organization comes into existence on the basis of goals of the enterprise which are separate from the personal goals of the people employed. It is a common purpose of the organizations which provides the basis of cooperation among the members of the organization। ये मतलब कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए, एक ही पर्पस होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे कोई आके काम करेगा। ठीक ना, एंड इसी के कारण एक दूसरे में कोऑपरेशन होता है कि ये काम करना है। ठीक है, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल, कॉमन पर्पस होना चाहिए। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन एज वेल एज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मीन्स ऊपर और नीचे, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर कौन होगा? जो अपलाइन है, ऊपर के लोग। ठीक है, ऊपर के लोग मतलब भगवान नहीं, ठीक है, ऊपर के लोग मतलब आपके सीनियर्स उसमें जो है। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स मीन्स आपके जो नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन बनता है ना ऊपर और नीचे। देन कम्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो हो गया हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ओके, different functions and the activities like production, marketing, financing etc are integrated for the achievement of a proper coordination। ठीक है, different functions and the activities like production, marketing, ये सारी चीज़ें, finance, ये functions different है, are integrated for the achievement of proper coordination। coordination के लिए एक प्रोडक्शन वाला आदमी प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग करेगा। ठीक ना, एंड सारे यूनिशन में काम करेंगे और इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट इन ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन आर ऑल्सो यूनिफाइड सो एज टू सर्व द पर्पस ऑफ देयर ज्वाइंट एफर्ट्स। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यूनिफाइड होता है सबका, गोल्स एंड जो पर्पस है, ठीक ना, उसके बेसिस पे, जिससे कि लोग ज्वाइंट एफर्ट लगाएं। ओके, चेन ऑफ कमांड। अब यहाँ पे चेन ऑफ कमांड देख लीजिए।
The superior subordinate relationship established in an organization are based on the authority which flow from the higher level of the management to the next lower levels, thereby forming a hierarchical chain. This is known as a chain of command which also determines the line of communication. ठीक है, जो सीनियर होता है, जो हायर लेवल जो है आपका, ठीक ना, सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर, ठीक ना, वहाँ से फ्लो करता है नीचे की तरफ कमांड। तो दिस इज कॉल्ड द ऑथोरिटीज, उस तरह से फॉलो करता है, विच इज़ कॉल्ड द चेन ऑफ कमांड। और कम्युनिकेशन भी इसी तरह से होता है। वर्कर कांट कम्युनिकेट विद डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, he will be communicating with the supervisor will communicate with the middle management, and the middle management will communicate to the higher management. The same way the things will come. Take a managing director never will contact directly to the worker, okay. This is all just a chain of command, it all moves in the chain, okay. Dynamics of organization. Besides the structural relationships among people which are based on their activities and functions, there exists an organizing interactions based on sentiments, attitude, behavior of individual and groups. So these aspects of relationship provide a dynamic element to the organizational functions. They are subject to change from time to time. ठीक है, जो आपके कल्चर्स होते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ के कल्चर्स, जो वर्कर्स हैं उसके अंदर में, ठीक है, मैनेजमेंट है, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, ओके, तो उनके कल्चर, रिलीजन, ये सब के बेसिस पे भी एक रिलेशनशिप डेवलप होता है वहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड डायनेमिक, विच एड्स ऑन a dynamic element to the organizational functioning, and they are subject to change time to time, okay. Importance of organization, आप देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जी, sound organization contribute greatly to the continuity and success of the enterprise. एक sound organization क्या contribute करता है, एक enterprise के continuity and success के लिए, okay. इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी डिस्कस्ड बिलो, इसके इम्पोर्टेंस जैसे ये सब हैं, ओके। फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करता है। साउंड ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेट मैनेजमेंट टू रिलेट रिसोर्स फ्लोज कंटिन्यूअली टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक साउंड मतलब बहुत ही तगड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट टू रिलेट रिसोर्स फ्लोज, रिसोर्स जो है आपके पास, जो रिसोर्सेस होते हैं उसको फ्लो करना है कंटिन्यू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कंटिन्यूसली, ठीक ना, फ्लो होता रहे वो, इसके लिए फैसिलिटेट करता है। इट प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर मैनेजमेंट कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। इसके थ्रू मैनेजमेंट क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, ये सारे फंक्शंस कर सकते हैं परफॉर्म। वो है प्लानिंग का, डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट करेंगे वो, मोटिवेशन मोटिवेट करेंगे लोगों को, एंड कंट्रोल, उन पे कंट्रोल भी करेंगे। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हुआ डिफरेंस, डाइवर्स, ओके। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल इलाबोरेशन, ठीक है। Growth and diversification of the activities is facilitated by clear division of work, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन में डिवीजन ही हो गया कि डिफरेंट वर्क सबको मिलेंगे, ठीक ना, एज पर दियर स्किल, ठीक ना, एंड कैपेबिलिटीज़। प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब ऐसी तो है नहीं कि बिना ऑथोरिटी, थोड़ा भी अथॉरिटी नहीं देंगे कोई काम कर लेगा, यू हैव टू डेलीगेट, यू कांट कीप ऑल द एक्टिविटीज़ विथ यू, अदरवाइज योर ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम स्लो, ओके। As the organization expands to the reasonable proportion, the functional types can be replaced by a more flexible decentralized organization, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एक्सपैंड करता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो फंक्शनल टाइप्स कैन रिप्लेस विथ मोर फंक्शनलिटी जो है इसकी डिसेंट्रलाइज हो जाती है। मीन्स कि एक जगह कमांड नहीं होता, कई जगह से कमांड होता है, बट सेंट्रल डिसीजन is still taken from central point. Still the different departments, different units, ठीक है, are set up around the globe, ठीक है, which takes decisions and delegated क्या बोलते हैं authorities they exercise
एट देयर ओन. ओके. परमिट्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, यह ऑर्गेनाइजेशंस क्या परमिट करता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ, मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज, ना अंडर ना ओवर, ऑप्टिमम वो होता है. ठीक है ना, ज़्यादा कर दिए, ज़्यादा भी करेंगे तो रिसोर्सेज ख़राब हो जाएगा. मशीनरी को ज़्यादा आउटपुट ले लिया आपने तो मशीनरी ख़राब हो जाएगा. अगर कम लिया तो भी बेस्ट हो गया ना, उसको प्रोडक्शन हमने किया ही नहीं, उसका यूज़ किया ही नहीं. तो ऑप्टिमम मीन्स द जितना हो सकता है. ओके. साउंड ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स ऑप्टिमम यूज ऑफ द टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, सेम चीज़ हो गया कि ऑप्टिमम यूज़ किया जा सकता है, जितना हो सकता है उसको, जितना लिया जा सकता है उनसे. द ऑर्गेनाइजेशन कैन इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट लाइक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स एक्सेट्रा. ठीक ना, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा प्रोसेसिंग, ये सब सारी चीज़ें लगा सकते हैं उसमें. इट परमिट्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स थ्रू स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइज करवा सकता है लोगों को, सिखा सकता है थ्रू ट्रेनिंग. ठीक है, ताकि उनसे ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट लिया सकता है. इट ऑल्सो डेवलप्स पीपल by creating appropriate training and promotional opportunities. Again, तो ट्रेनिंग एंड प्रोमोशनल, प्रमोशन भी देंगे तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अगर आप बोलें किसी को कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू बी प्रोमोटेड हेयर, ठीक ना, तो दे विल बी मेकिंग एफर्ट्स एज पर दैट. ओके. Thus, organization gives a company the greatest possible strength for meeting predicted needs changing conditions. ठीक ना, तो इससे क्या होता है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी मिल जाती है, पॉसिबल स्ट्रेंथ मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को, जो कि चेंजिंग कंडीशंस में, ठीक है, वो अपने प्रेडिक्टेड नीड्स को फुलफिल करें. स्टिमुलेट क्रिएटिविटी. ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है यहाँ पे. स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विथ वेल डिफाइंड ड्यूटीज, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, स्पेशलाइज्ड जब हो जाता है आदमी तो उसको एक वेल डिफाइंड ड्यूटीज़ मिल जाते हैं, काम एक पूरा क्लियर काम आ जाता है कि हाँ ये काम करना है आपको. क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी भी मिल जाता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाता है उनको. ठीक है. Sound organizational structure enables managers to turn over routine and repetitive jobs to supporting positions and concentrate on important issues where they can exploit their potential better. ठीक है, तो आप अपने डाउनलाइन को, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को एक अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं, जिसके बाद आप अपने, ठीक है, रूटीन अथॉरिटीज़ जो रूटीन जॉब वाले अथॉरिटीज़ हैं, ठीक ना, हर चीज़ के लिए आपके पास आके पूछते नहीं रहेगा कि ये करूँ. ठीक ना, तो दैट इज़, इफ़ दैट इज़ ऑफ रूटीन नेचर, यू विल डेलीगेटिंग टू देम. ठीक है, तो इससे क्या होता है, दस इट इंकरेजेज द क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल. उन लोगों में क्रिएटिविटी पैदा होती है. ठीक है, वो लोग जो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंकरेजेस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ठीक है, ये क्या है, इंकरेज करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को. ठीक ना, आदमीयतता को. ठीक है, पीपल कैन वर्क इन टीम एंड नॉट लाइक रोबोट्स एंड और मशीन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट. जॉब्स आर डिजाइंड टू सूट ह्यूमन नीड्स एंड आर मेड मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो काम को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, मीनिंगफुल बनाया जाता है. ठीक है, रोटेशन किया जाता है, इनलार्जमेंट एंड इनरिचमेंट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, एंड उसको ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है. ठीक है, रोबोट्स और मशीन की तरह काम नहीं करते लोग वहाँ पे. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है. ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट एफिशिएंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिनोमिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, कई सारे मेथड्स जो हैं, एफिशिएंट मेथड्स, उसको अडॉप्ट किया जाता है. फॉर सिलेक्शन ऑफ द पीपल. ठीक है, उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए, एंड रिनोमिनेशन मीन्स उनको पैसे देने के लिए, मतलब सफिशिएंट जो उनको मिलना चाहिए, एंड देन उनको प्रमोट भी करने के लिए. ठीक है, प्रॉपर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट एंड डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप प्रोवाइड हायर जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज़.
देखिए डेमोक्रेटिक हो गया कि सबकी सहमति से सबके विचार से किया जाए उस सारे काम को, ठीक ना। उसके बाद कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट मीन्स कि जिसमें अच्छा लगे लोगों को, ठीक है, जहाँ पे बोल सकें हों, बता सकें कि क्या चीज़ उनको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक ना। प्रॉपर डेलीगेशन मीन्स कि हर किसी को अथॉरिटी जो है ना, मतलब एकदम आप पे ही डिपेंड ना करे वो, ठीक ना। यू डेलीगेट देम। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप अपने पास ही सारा अथॉरिटी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ आपका सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। इट इन्हांसेस द इंटरेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा इन्हांस हो जाता है। Although we have discussed the importance of the organization, a sound organization structure by itself does not guarantee success, ठीक है। साउंड स्ट्रक्चर itself गारंटी नहीं कर सकता कि ये सक्सीड ही होगा। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, good organization structure does not by itself produce good performance, just as good constitute does not guarantee great presidents, okay, or good laws or moral society, ठीक है। बट अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स मेक्स गुड परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नो मैटर हाउ गुड द इंडिविजुअल मे बी, ठीक है। देखिए एक साउंड एंड गुड स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस या एंटरप्राइज सक्सेस हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो मान के चलिए यहाँ पे, जो अकॉर्डिंग टू जोकर बोलते हैं, ठीक है, कि अगर बैड है, मतलब अगर पुअर है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये तो समझ ही लीजिए कि तो वो सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके पीछे, इसके सक्सेस के पीछे। लेकिन अगर पुअर स्ट्रक्चर है तो आप समझिए कि फेल तो होना ही होना है, ओके। स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक ना, कई सारे स्टेप्स हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। 2.1.2 ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इंटर रिलेटेड स्टेप्स, ठीक ना। ये सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग, ओके, ठीक ना। ये सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट to identify the objectives before starting any activity. It will help the management in the choice of main and material with the help of which it can achieve its objectives. Objectives also serve as a guidelines for the management and the worker. They will bring unity of the direction in the organization, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आपको डिटरमाइन कर लेना है कि क्या काम है, क्या मतलब आपको अचीव करना है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इसका क्या एंड रिजल्ट क्या आना है, ओके। तो इसके बाद क्या है, आपको मज़ा आएगा वहाँ पे काम करके, यूनिटी होगा वहाँ पे, ठीक ना। एंड वर्कर्स को गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कर देंगे आप, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। If the member of groups are to pull the efforts effectively, there must be proper division of major activities. Each job should be properly classified and grouped. This will enable the people to know what is expected from them as a member of group and will help in avoiding duplication of efforts, ठीक है। यहाँ पे तक समझ में आ गया आपको। इसमें बताया गया कि डिवीजन मतलब प्रॉपरली एक्टिविटीज़ जो है ना, ऑन द आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कौन कौन सा एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो सब लोग रिपीटेटिव काम कर रहे होंगे, चीज़ों को बार बार कर रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड डिवीजन के कारण से आप एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी तैयार करेंगे, जैसे प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस ओनली, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट विल फाइनेंस ओनली, and marketing department market only, and sales department will sell only, ठीक ना। तो इस तरह से आपको एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर लेना, ओके। अब इससे क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स जो है वो अपने एक्टिविटी उस तरह से लगाते हैं जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल के लिए आप देख लेते हैं। The total activities of an individual industrial organizations may be divided into major functions like production, ठीक है, देख लिया आपने, production, purchasing, marketing and financing, and each such function is further subdivided into various jobs, ठीक है। ये सारे functions जो है ना, ये 4 functions हो गए,
4 फंक्शंस भी बाकी वेरियस जॉब्स में डिवाइड हो जाते हैं. द जॉब्स देन मे बी क्लासिफाइड एंड ग्रुप टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर स्टेप्स. ठीक है, आगे के स्टेप्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्लासीफाई करना ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में. ओके, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़. अब देखिए ड्यूटीज़ भी अलॉट करना है. ठीक है, हर किसी का अपना अपना ड्यूटीज़ होना चाहिए. आफ्टर क्लासीफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी इनटू वेरियस जॉब्स, they should be allowed to the individuals so that they could perform them effectively. Each individual should be given a specific job to do according to his ability and made responsible for that. He should also be given the adequate authority to do the job assigned to him. ठीक है, अब देखिए ड्यूटीज अलॉट करने हैं लोगों को कि क्या काम करोगे आप, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके स्पेशलिटी के हिसाब से, एंड उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है. ठीक है, क्योंकि इन एडिक्वेट अथॉरिटी भी उनको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कुछ हो गया प्रॉब्लम तो वो उससे डील कर सकते हैं उससे. डेवलपिंग रिलेशनशिप्स. सिंस सो मेनी इंडिविजुअल्स वर्क इन सेम ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ the responsibility of management to lay down structure of relationships in the organizations. Everybody should clearly know to whom he is accountable to. Okay, हर किसी को पता होना चाहिए कि किसके प्रति वो अकाउंटेबल है, कौन उससे पूछेगा, क्वेश्चन करेगा. नॉट एवरी वन विल कम एंड आस्क व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट बी आस्किंग फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पीपल. ठीक ना, व्हाट आर यू डूइंग. So everyone is actually clearly knowing that whom he is accountable. Okay, this will help in a smooth working of the enterprise by facilitating delegation of responsibility and authorities. तो authorities and responsibilities को delegate किया जाता है. ठीक ना, इस कारण से. Okay, integration of this groups of activities. Integration can be achieved in all activities in following ways. डिफरेंट वेज हैं, उसमें इंटीग्रेशन को अचीव किया सकता है. थ्रू ऑथोरिटी रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड लेटरली. ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया आपको डिपार्टमेंट वाइज, वर्टिकल हो गया सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वाइज, उसका एंड लेटरली मतलब हो गया कि सम पर्सन, सम वर्कर ऑफ द दिस डिपार्टमेंट, सम सुपीरियर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ये लेटरल हो गया. थ्रू ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, वी कैन अचीव यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट बाय इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या अचीव होगा, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव यूनिफाइड हो जाएगा, जिसके कारण से अचीवमेंट बढ़ जाएगा. Now it's the 2.3 principles of organizations. Okay, so I will be going fastly now. The principles of organizations are guidelines for planning an efficient organizational structure. Let us discuss the important principles of organizations. What are the principles? It lays the guidelines for planning, okay, an efficient organizational structure. To make a efficient organizational structure, it provides guidelines. Okay, first, unity of objectives. An enterprise strives to accomplish certain objectives. You know, objective is actually main thing in any enterprise. So what an enterprise strives to accomplish certain objectives. Okay, the organization and every part of it should be directed towards the attainment of objective. That objective is to be attained and everything is to be directed towards that. Okay, every member of the organization should be familiar with its goal and objective. Means every member should be familiar with that. Okay, there must be unity of objective so that all efforts can be concentrated on the set goal. ठीक है, so what is to be the unity of objectives? Means objective is to be unified so that all the efforts can be directed or concentrated towards the set goal. Okay, the principle requires objectives to be clearly formulated and well understood. Clearly formulated, this is to be formulated very clear and it is to be understood.
well understood. Division of work and specialization. Second point is division of work and specialization. The entire work in the organization should be divided into various parts so that every individual is confined to the performance of a single job. Every individual is to be given some specific task or a specific job as per their expertise or a specialization. So the entire work is to be divided, and a small chunk of work is to be handed over to an individual. So he is responsible for performing that job. Okay. This facilitates specialization, which in turn leads to efficiency and quality. Means over a period of time, okay, if someone is working continuously the same thing he is doing, he will become efficient and the quality of your product or produce will improve. However, each area of a specialization must be interrelated to the total integrated system by means of coordination of all activities of all departments. So all the specializations are to be interrelated. It is to be related with each other. Definition of job. Third point is definition of jobs. Every position in the organization should be clearly defined in relation to other position in the organization. Jobs are to be definable, not that everyone's job is different. Okay, means in the same organization, take in the same organization, the same definition of that job is to exist. The duties and responsibilities assigned to every position and its relationship with the other positions should be so defined that there is no overlapping of functions. Means not everyone is doing the same thing, same work. Okay. Separation of fourth point is separation of line and staff functions. Separation of line and staff functions. Okay. Now let's explain it. Whenever possible, line functions should be separated from staff activities. Okay. Line functions are those which accomplish the main objective of the company. Okay. What is the line function? Line functions are those which accomplish the main objectives of the company. In many manufacturing companies, the manufacturing and sales department are considered to be accomplishing the main objective of the business, and so are called the line functions. What are the line functions? Which is directly involved in achievement of the objective. Okay, that is called a line function. Other functions like personal, plant, maintenance, financing and legals are considered as staff functions. So the main functions will be called the line functions, and the other functions like financing, legal and maintenance, these are not directly involved in attaining the objective, but still that is a supportive to them. If these all doesn't exist, it is not possible to achieve the primary objective, though they are not involved in the main objectives. Okay. Then is the chain of command or a scalar principle. There must be clear lines of authority running from the top to bottom of the organization. So the authority is to be clear and it should be running from the top to bottom. Okay, not the bottom to top or from anywhere, means diagonal or horizontal. It should be running from the top to bottom of the organization. Authority is the right to decide, direct and coordinate. Means what decision you can take at your own, okay, whom you can direct and whom you how you can coordinate, okay, is all depends on your authority. Okay. The organization structure should facilitate delegation of authority. The structure should structure to facilitate delegation of authority. If a single manager keeps all the authorities with himself, so it is the organization will become very slow. So it is to be delegated to the lower levels. Okay. Clarity is achieved through delegation by steps or levels from the top positions to the
operating levels. From the chief executive, a line of authority may proceed to the departmental manager. Means from chief authority, delegation by step or levels from top positions to the operating level. Okay, from the chief executive is considered the higher rank, higher level. A line of authority may proceed to the departmental manager. Means chief authority can delegate its authority to the departmental manager. Then departmental manager can again delegate the authorities to supervisor or foreman, and finally the ultimate supervisor or foreman can delegate the authority to workers. This chain of command is also known as a scalar principle of organization. What it is called? What it is known as a scalar principle of organization. So this is the command follows from the top to bottom. Means from top leadership to the bottom worker. It goes on. The command goes on, and this chain of command is also called as a scalar principle of organization. Okay, next point is parity of authority and responsibility or principle of correspondence. Okay, responsibility should always be coupled with the corresponding authority. It is known that with a great authority power comes the great responsibility. Here again I'm just repeating, the more you are having authority, the more you are responsible to also. Each subordinate must have sufficient authority to discharge the responsibility entrusted to him. If you ask someone to discharge the responsibilities, he should be having some authority also, which will enable him to discharge his duties. Okay, this principle suggests that if a plant manager in a multi-plant organization is held accountable for all activity in his plant, he should not be subject to seek orders from company headquarters for his day-to-day activities. Means what is to be done, every now and then he will just be taking permissions from the headquarters, company headquarters. Then it is going to slow down the process, though it will be running. But again, the responsibility can't be set to him, because everything is happening, everything is taking place on the orders of the company headquarters. So you can't set the responsibility if you don't give the authority. Okay, next is unity of command. No one in the organization should report to more than one line supervisor. Okay, what means unity? Unity means unified direction. It is to be from unified direction. Some means some worker, some group of workers will report to the one supervisor, not to the 2-3 supervisor continuous at a time. Okay, everyone in the organization should know to whom he reports and who reports to him. Who reports to him refers to the supervisor or managers under whom the workers are working, so our subordinates are working. And whom he reports to means it refers to the worker, because he will just be reporting to some supervisor. And it also refers to the supervisor when it reports to the manager, and to manager when it reports to the higher authority. Stated simply, everyone should have only one boss. Okay, there should be only one boss. A worker is there, he should be having a boss called supervisor. Then supervisors should have a boss called manager. Managers should have a boss at the higher authority. Okay, receiving directions from several supervisors may result in confusion, chaos, conflict, and lack of action. Means a person, means a supervisor comes and directs you to do something, other supervisor comes and directs you to do something else. So there will be confusion, chaos, conflict, and lack of action in this respect. Okay, next it was unity of command, unity of direction. The same way it will also apply. According to this principle, a group of activities that have a common goal should be managed by one person. Means
the activities, the group of activities means of a same common goal should be managed by one person, not being managed by several person. Okay, if some plant is there which manufactures something, it should be supervised by one person ultimately. Otherwise, then again, a same plant is supervised by many same unit is supervised by many supervisor or managers. It will create chaos. There should be one head and one plan for a common objective of different activities. Okay, one head and one plan for common objectives of different activities. Okay, this facilitates a smooth progression towards the achievement of overall organizational goal. It provides the smooth progression. Okay, next point is exception principle. This principle suggests that higher level managers should attend to exceptional matters only. All routine decisions should be taken at the lower level, whereas problems involving unusual matters and policy decisions should be referred to the higher levels. Means the things which is of routine nature is to be taken up with the to be taken up by the lower level, and wherever the problems involves any like any unusual matters or policy decisions, it is to be referred to the higher levels. Okay, span of supervision. The term a span of supervision means the number of persons a manager or a supervisor can direct. Okay, no manager should be required to supervise more subordinate than he can effectively manage within the limits of available time and ability. So it is to be worked out. Okay, how many workers he can handle at a time. If you are giving a ocean of people to handle with, he will not be able to. So what will happen again? The same things, chaos, conflict and lack of action. So he will not be able to make everyone accountable. He will not be able to communicate with them. He will not be able to take reportings from all. So it will just become havoc. Okay, so the number of people reporting to him is to be limited by his efficiency or some other principles. Okay, the exact number may vary according to the nature of the job and frequency and intensity of supervision needed. Okay, the numbers is not exact given here, it is to be decided there. Okay, next point is principle of balance. There should be proper balance between various parts of the organization, and no function should be given undue importance at the cost of others. Okay, balance should be maintained also between the centralization and decentralization, span of supervision and lines of communications, and authority allocated to department and personnel at various levels. So balance is to be perfect, balance to be maintained at various levels at in the organization. Okay, next comes the communication. Next point is communication. A good communication network is essential to achieve the objective of an organization. To achieve the objective of an organization, a good communication network is to be there. Okay, no doubt the line of authority provides channels of communications downward and upward. Still some blocks in communication occur in many organizations. Though there is a upward and downward communication channels, but still blockade are there. Several blockades are there. The confidence of a superior in his subordinate and two-way communications are the factor that unite an organization into effective operating system. Confidence of superior in his subordinate and two-way communication means everyone. If you are saying something, you should be able to receive something from the subordinate also. So this is called the two-way communication. Next point is flexibility. Okay, the organizational structure
should be flexible so that it can be easily and economically adapted to the changes in the nature of business as well as technological innovations. So there should be flexibility in the organizational structure, so so that it can adapt to the changing environments like technological innovations and all. Flexibility of organizational structure ensures the ability to change with the environment without disrupting the basic design. Means flexibility means it is to be so flexible so that it can adopt the changes without disrupting its basic design. Okay. Next comes the continuity. Change in law of nature. Change is the law of nature. Many changes take place outside the organization. These changes must be reflected in the organization. If the changes are taking outside the organization, the same is to be reflected in the organization also. For this purpose, the form of organizational structure must be able to serve the enterprise to attain its objective for a long period of time. So it is to be changed so that it can attain its objective for the long period of time. So this is 2.4 classical theory of organization, means the theory of the organization in the olden days. Okay, the old theory of organization are classified as classical theory of organization. The origin of classical theory can be traced back to the writings of F.W. Taylor, Max Weber, James Murray, E.F.L. Veitch and Lois Allen. The impact of classical theory has been profound. Hence it was very impactful. Okay, these all thinkers have given this theory. Classical theory was developed in three streams: in bureaucracy, administrative theory and scientific management. In three streams this theory was developed. These components of a classical theory were developed on similar assumptions at about the same time. Okay, which time? 1900 to 1950 AD. These components developed the idea of a structure within the connotation of organization. Accordingly, organization was defined as a structure of relationships, power, objectives, roles, activities, communications and other factors that exist when persons work together. Thus, these streams of classical theory view organization as a mechanistic structure. Let us learn these three streams of classical theory in detail. So what we will do? We will learn these three classical theories in detail now. First one is bureaucracy. Bureaucracy is a social invention perfected during the Industrial Revolution to organize and direct the activities of firm. When it was invented, it was invented during the Industrial Revolution to organize and direct the activities of a firm. Okay, it describes the system where the government is run by officials. Okay, when the government is run by the officials, okay, directly or indirectly. Bureaucracy is defined as a system of organization in which roles, tasks and relationships among people and the positions are clearly defined. It is clearly very clear. Okay, carefully prescribed and controlled in accordance with the formal authority, and any deviation from the rules and regulations is viewed very seriously. Here in bureaucracy, no deviation is permitted and any deviation is viewed very seriously. Okay, the bureaucratic theory was systematically developed by Max Weber. When it was developed, 1864 to 1920. Weber termed his formulation of organization as a ideal type. According to Max Weber, every organization can be defined as a structure of activities, or you can say means, directed towards the achievement of certain objectives, hence ends.
With the help of means, you find some ends. Okay. Every organization develops a system of a specialization. Okay. System of specialization is division of task. The task is to be divided as per people's specialization, and the set of systematic rules and procedures to maximize efficiency and productivity. So what is to be maximized? The efficiency and ultimately the productivity. Weber stressed that the bureaucratic form is capable of attaining the highest degree of efficiency. So bureaucratic form is having the capability of attaining the highest degree of efficiency here, and in this sense, formally the most rational known means of carrying out the control over human beings in any organization. Okay, it is superior to every other form in precision, stability, discipline, and reliability. Weber tried to identify various factors and conditions that has contributed to growth of bureaucracy in modern times. Okay, in modern times, the which bureaucracy is existing, Weber has tried to identify and factor the condition. Okay, of in those days. Okay, development of modern organization and corporation led to the development and the considerable spread of bureaucracy in organizations. Bureaucracy is simple, indispensable, irrespective of its inherent evils for the running of complex organization. Secondly, an important factor responsible for the superiority of bureaucracy is the role of expanding technical knowledge and the development of modern technologies. Whether the economic system is a capitalistic or socialistic, or considerable degree of bureaucratic specialization, a considerable degree of bureaucratic specialization is required to attain the high level of organizational efficiency. Thirdly, Weber repeatedly stressed the fact that the capitalist system has undesirably played a major role in the development of modern bureaucracy. The proper functioning of capitalist system necessitated a stable state and a well organized administration, besides capitalism is considered the most rational economic basis for bureaucratic administration itself. So this is all. Then comes the characteristics of bureaucracy. What are the characteristics of bureaucracy? The bureaucratic form of organization is distinguished by the following structure and behavioral characteristics. Division of labor and specialization. Again, here comes the inside the characteristics of bureaucracy: division of labor and specialization. A specialization based on division of labor is a cornerstone of bureaucracy. It applies more to the job than the individual. The roles of various officials based on the division of job are clearly defined. This leads to the clear definition of job content of an individual and his position in the organization set of within which in turn leads to the clarity of goals, objectives of the organization and helps in designing the hierarchical structure of the organization. It is based on a specified sphere of competence which involves what this involves: a sphere of applications to perform functions which has been marked off as part of systematic division of labor. The provision of incumbent with necessary authority. The necessary means of compulsion are clearly defined and their use is subject to definite condition. Then comes the hierarchy. Hierarchy
is the second fundamental characteristic, which is the feature of any bureaucratic form of organization. There is a clear separation between superior and subordinate officers, that is, each lower officer is under the control of supervision of a higher one. Remuneration is fixed in accordance with the nature of the job and grade of responsibility. Promotion and career advancement is on the basis of seniority and merit. Next point is rules. Next characteristic is rules. Bureaucracy operates in accordance with the consistent system of abstract rules. The role of rules has been stressed by Weber so that personal favoritism, arbitrariness, or nepotism may not hinder the working of an organization. Next is every act of personal discretion of officials must be justified by impersonal ends. Next is rationality. Weber's idea on efficiency and rationality are closely related to his ideal typical model of bureaucracy. He observed that bureaucracy is the most rational known means of achieving imperative control over human being. It is capable of obtaining a high degree of efficiency since the means used to achieve the goals are rationally and objectively chosen towards the desired ends. An added factor of efficiency is that personal whims of the leaders and the traditional pressures are no longer effective in such a system. It is run according to rules, and there is a clearer demarcation between the personal and the official affairs. Rationality is also reflected by the relatively easier means of calculability of results in the organization. Next point is impersonality. It should be observed by all officials in decision making and in overall organizational life. The bureaucratic form has no place for personal whims, fancies, or irrational sentiments. Official activity is conducted in a business like manner with a higher degree of operational impersonality. Then is role orientation. Rationality and impersonality are mainly achieved through formulation of rules and procedures which clearly defines official spheres of authority and conduct. Employees are expected to follow the rules in discharging their duties. Neutrality. Neutrality is in decision making and their implementation are the cardinal principle of a bureaucratic way of functioning. Bureaucracy is supposed to be a political and neutral in its orientation. It is committed only to the work it is meant to perform. Criticism of bureaucracy. There are various criticism of bureaucracy also there. Max Weber gave the model which is normative in nature and could be followed by any large complex organization. However, the actual practice of bureaucracy often falls short of these ideals. Bureaucracy is a necessary evil in large organizational complex organization. Following demerits have been pointed out in the bureaucratic model by various scholars. First is rigidity. A rigid organization often fails to see innovation as a necessary life-giving element to an involving adaptive organization. The ultimate goal of bureaucracy sometimes seems to be perfect, but its extensive dependence on rules tend to kill initiative and it leads to obsolescence of an organization. Impersonality. Relationships in a bureaucracy are secondary and contextual rather than being primary and personal. The characteristics of impersonality, anonymity, neutrality to values, etc., are contradictory to the very basic nature of the organization, which close cooperation between the people and
Bureaucracy is desirable. Lack of personal involvement leads to poor productivity levels. Delegation. It is criticized on the grounds of problems of delegation that crop up in operative stages. The bureaucratic staff tend to concentrate power at a higher position, and very little of delegation of authority and responsibility down the rank is seen. In absence of delegation, operational decisions are unnecessarily delayed. Means organization becomes very slow. Then is a goal displacement. Excessive adherence to rules and regulations lead to the problems of goal displacement. The rules and regulations that are meant to facilitate and the functioning of the organization are adhered respective of the fact that whether they lead to the goal achievement or not. A strict categorization. In bureaucracy, coordination and specialization are advantageous if there is a strict categorization or compartmentalization of activities and persons. The dysfunction of categorization results from the tendency of bureaucracy to grant carrier status to opposition. Bureaucracy is not comfortable with the fact that an adaptive world can never be completely or categorized. Self-perpetuation and empire building. Bureaucrats often think that holding an office gives him personal ownership and privileges. Through their desire to perpetuate the old bureaucracies discourage innovations. According to Max Weber, once it's fully established, bureaucracy is among those social structures which are hardest to destroy, even when it has outlived its usefulness. In bureaucracy, prestige and pay are often determined by the number of one's subordinate. Thus, the chief aim of bureaucracy is increase the number of people employed under one's control. This is familiar empire building. Cost of control. The cost of maintaining rules, regulations, and sometimes seemingly countless procedures employed to gain conformity in bureaucracy is dysfunctional. There is a frustration from perceived excessive restrictions and delays imposed by the bureaucratic procedures. Next theory is administrative theory. Scientific management was primarily concerned with increasing the productivity, increasing the productive efficiency of individual workers at the shop floor. The role of managers and their functions in the total organization were not given adequate attention. Around the same time, that is the first quarter of 20th century, Henry Fayol, director of coal mining company in France, made a systematic analysis of a process of management. His approach to the study of management is also known as the functional approach. According to Fayol, business activities in any organization consist of 6 interdependent operations, that is technical, commercial, financial, security, accounting, and administrative or managerial operations. He analyzed the nature of managerial activities and the skill requirement which were so far given little attention by the thinkers. He considered the process of management to be the universal application and distinguished among 5 elements of the process: to forecast, the plan, to organize, to command, to coordinate, and to control. The concept of management was thus defined as the process of performing certain functions like planning, organizing, etc. These functions were expected to be performed by managers at all levels in the organization as well as in all types of industries and in all countries. Fayol emphasized that management involved the application of certain skills which could be acquired by a person on the basis of systematic instructions and training.
Once acquired, the skills should be applied to all types of institutions, including the church, schools, political, as well as the industrial organization. Besides a systematic analysis of management process and management functions, FAIL formulated to set up 14 principles as guidelines for the implementing the process of management. These principles were stated in flexible terms and expected to be of use of manager under all circumstances. The skill and the abilities required for the effective management were stated to be dependent on the manager's position at different levels of organization. According to FAIL, administrative skills were more essential for higher levels of managers, while technical abilities were required more at the lower level of positions. He also believed he also yeah, he also believed that the managerial training was essential for the people in all walk of life. He stressed for the first time the necessity of formal education and training in the management. In short, FAIL's analysis provides a set of means: widget, planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling for viewing the management process and guidance. The principle of implementing the process. The 14 principles of management are as follows. You have already learned them in Unit 1. Let us recapitulate them. Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, esprit de corps. That administrative theory of management and functional approach to the management may be said to have developed on the foundation laid by the FAIL. He provides a conceptual framework for analysis the process of management. At the same time, he isolated and analyzed management as a separate, distinct activity. Management as a body of knowledge gained immensely from FAIL's analysis of managerial skills of universal relevance and principles of general management developed by him. Although some critics called it inconsistent, vague, and pro-management based theories, still this theory exerts considerable influence on the practice as well as teaching of management the world over. Third one is scientific management. So we'll just be covering this now. The approach of scientific management was formulated by F.Y. Taylor and others between 1819 and 1930, sought to determine scientifically the best method for performing any task and for selecting, training, and motivating workers. Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor, and other contributors, notably Franklin Gilbreth, Lenian Gilbreth, and Henry Gantz, investigated the effective use of human beings in industrial organizations, particularly at the shop floor levels. Taylor, 1856 to 1915, an engineer by training, he is regarded as the father of scientific management. So he is regarded as the father of scientific management also. Okay. Taylor based his management system on production line time studies instead of relying on traditional work method. He analyzed and tuned a still worker movement on a series of jobs using time study as his best ways. He broke each job down into its component and designed the quickest and best method of performing each component.
In this way, he established how much should workers be able to work with the equipment and material at hands, and also encouraged employers to pay more productive workers at a higher rate, using a scientifically correct rate that would benefit both company and worker. Thus, workers were urged to surpass their previous performance standards to earn more money. Taylor called this his plan the differential rate system. The modern production miracle is just one legacy of scientific management. In addition, its efficiency techniques have been applied to many tasks in non-industrial organizations, ranging from fast food services to the training of surgeons. Taylor relentlessly pursued the idea that efficiency at work could be improved through careful scientific analysis. He advocated an inductive, empirical, detailed study of each job to determine the one best way to organize work. Taylor's concept of scientific management essentially consisted of a scientific approach to management. Its primary objective was to replace methods based on trial and error and rules of thumb. The new approach rested on the following principle. There are few principles here discussed, so we'll reading it now. Development and use of scientific methods in setting work standards, determining a fair day's work and best way of doing work. Scientific selection and placement of workers best suited to perform the various tasks and provision of their training and development for maximum efficiency. Clear cut division of work and responsibilities between management and workers. Harmonious relations and close cooperation with workmen to secure performance of work in accordance with the planned jobs and tasks. A number of techniques were developed to facilitate scientific management. Taken together, following techniques constitute the mechanism of new approach. Time study to analyze and measure the time taken in doing the various elements of jobs and to standardize the operation as well as determining a fair day's job. Motion study involving close observation of the movement required to perform a job with a view to eliminate wasteful motion and decide on the best way of doing the job. Means the people are going here and there and again is a waste of time. So it is to be organized in such a way that least motion or least action is required. A standardization of tools, equipments and machineries and working conditions. So the conditions, the tools and the equipment are to be standardized, so that it is everyone is familiar with that. Okay. Incentive wage plan with differential piece rate of wages for efficient and inefficient workmen. So the efficient workmen are to be given the incentives and inefficient will not be given. Functional foremanship involving different specialist foremen supervising machine speed, group work, repairs, etc. Taylor presented his idea on scientific management as a systematic body of thought. His main contribution to the management practices includes the following aspects. Okay, what are those aspects? The importance of applying scientific method of inquiry, observation and experimentation to the problems of management. Next is separation of planning of work from its execution so as to enable workers to perform at its best and earn accordingly. Okay. Next is emphasizing the aim of management to be the maximum prosperity of the employer along with the maximum welfare of each employee. Last one is the necessity of a complete mental revolution on the part of both workmen and the management
to drive the benefit of scientific management through harmony and cooperation rather than individualism and discord. Then what are the merits of scientific management? Here you can see the primary benefit of scientific management was conservation of proper use of every ounce of energy. Every ounce of energy was being used. Moreover, a specialization and division of labor have brought about the second industrial revolution. What it brought? It brought about the second industrial revolution at that time. Time and motion techniques are important tools to organize the tasks in the more efficient and rational way. In short, scientific management is not only the rational approach to solve organizational problems, but it also facilitates the professionalization of management. Okay. Although the basic principles of scientific management were originally developed by Taylor, several associates of Taylor like Gant, Frank, and Lillian Gilworth and Emerson further elaborated the idea, developed new techniques, and improved upon new approaches to the management. In practice, scientific management proved to be so fruitful in increasing productivity and efficiency of operation that it was widely accepted in USA and Western Europe. Then it is having merits, then it would be having some limitations also. Everything has limitations, it also have. Okay, now we'll just be analyzing the limitations. Scientific management has its limitation and was criticized on several grounds. Some critics argue that scientific management is concerned with the efficiency of workers in the technical sense, and it emphasizes only the importance of production. It assumes that workers are inherently lazy and they require strict supervision and exercise of authority by the manager. It is believed that workers can be motivated by monetary rewards alone. No importance is attached to the social and psychological aspects of work environment. Okay. The other critics also have called it unscientific, antisocial, psychologically aspect of work environment. Other critics in scientific, antisocial, ये बोलते हैं. Other critics is unscientific, antisocial, psychologically unfair, and anti-democratic. It is unscientific because there is no valid and reliable method to measure the efficiency of wages of the worker. It is antisocial because workers are treated as glorified economic tools only. It is psychologically unfair because each worker is pitted against every other worker in an unhealthy competition scheme to make more and earn more. It is anti-democratic because it overshadows the workers' independence. Trade unions have been opposed to scientific management on the grounds that it leads to autocratic management and raises the workload of employees with a corresponding adverse impact on employment of the men. So this is all in this part. So I'm going to make two parts of this unit. So 12 pages has just been covered here, and rest of the half of this unit will be covered later in this part 2. In the next video I will just be covering 2.5 neoclassical theory of organization. So I will continue from here. Hope so you have enjoyed all the teachings I have and you have understood it well. And subscribe if you have not subscribed it, please subscribe this channel so that you get the notification of the next upload sooner. And if you're watching it at later stage when all the uploads has been done, so go see in the playlist. I have just made separate playlist, and even you can visit my website where I will just be hosting all these
things. I will just be giving the links of the website and playlist in the description box. Thanks for watching.